जिंदगी में भैया नहीं हुआ। अरे 2 मिनट यार, मैं म्यूजिक बजवाऊं 2 मिनट। जिंदगी में ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि राइट पे लेफ्ट पे इतने गुड लुकिंग लोग खड़े हैं मेरे। I can't handle it. Wow. Okay, you just pushed up the hotness quotient of the Kala Ghoda Arts Festival between the two of y'all, and I'm so lucky that you're here today. Can I hear from you, Shahid? What does the festival mean to you? Oh, Romeo at Kala Ghoda, what does it mean? First of all, good evening, guys. How are you guys doing? It's so nice to be here. Thank you for giving us so much love. We love you all. We love you all. Thank you so much. Everybody here, thank you so much. We love you. Thank you. ये ना मेरे लिए this is a very funny feeling right now. मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ना, exactly here in 1996, which is what 30 years back. 30 years ago. मैंने एक ऐड किया था जो मेरे ज़िंदगी का सबसे पहला ऐड था, और वो दैट हैड शाहरुख खान, रानी मुखर्जी एंड कजोल, और मैं उस टाइम 15 साल का था, 16 साल का था, और यस दैट वाज अ पेप्सी ऐड एग्जैक्टली। और यहाँ पे बस खड़ी हुई थी, यहाँ पे बस लगी हुई थी, और बस के ऊपर शाहरुख सर थे, कजोल मैम थी, रानी वाज देयर, और मैं 15 साल का, और ऊपर हम लोग डांस कर रहे थे। और एग्जैक्टली यहीं पे अगेंस्ट दिस विजुअल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी मुंबई विच इज़ फ्रॉम 1804 मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला शॉट दिया था कैमरे के सामने। सो दिस इज़ सो क्रेजी दैट आई एम हियर एंड इट्स बीन 30 years, और आज आप सब लोग मुझ में इतने इंटरेस्टेड हैं, उस दिन मुझ में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। So it's so nice to be here, guys. We are very happy to be here. This is an amazing festival. It's a privilege to be here on this stage. Thank you so much for showcasing the song of our film Pan Ki Dukaan. Releasing on the 13th of Feb is Oh Romeo, and this is Romeo, and this is my Juliet, Tripti Jimli. And we're very excited to be here tonight and talk about the film and just give and take some love. Tripti, welcome to the Kala Ghoda Arts Festival. Thank you so much. Tripti, दिमरी को देख के धड़क रहा है कि नहीं दिलो? कभी नैला, कभी जूलियट, चल क्या रहा दीदी? चल रहा है बस। कि एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगी यार? है ना? No, the boys are very shy and so are the girls. I want more noise for Tripti now. है ना Tripti? I think it's an absolute wonder to see your work. Okay? And I know for a fact that there is a shot in that promo where you're kind of like, this to Shahid Kapoor, yaar. क्या चल क्या रहा है? Can you talk to us a little bit about where you are in your career right now, what it means to be here on this stage, and what does Oh Romeo mean to you? It means a lot. Yeah, I'm super happy and very, very grateful. Hi everyone. Sorry, I forgot to say hi to everybody. Hello everyone. How are you doing? I'm very excited to be here. It's a dream come true for me. I was just telling my team कि मैं festival आती थी पहले अपने friends के साथ, and today that I'm standing on the stage and talking about my film, it's just a very special feeling. I'm very emotional right now. It's amazing. I'm very, very happy and excited. Well, we're very grateful both of you made time to be here. Yes, round of applause would be nice. Shahid, there's you with every director. But one second. जोड़ियाँ कहते हैं ना, just not man and woman. There are these jodis like Shahid Kapoor and Vishal Bharadwaj, guys. Cinematic jodis like this. You said Shahrukh, Kajol, I'm saying Shahid, Vishal. You guys are coming back now. Okay, you've done a Dan together. Okay, which is Kamine. Heather. Oh Romeo. So tell us, what is that magic between the two of you? विशाल सर का कुछ ऐसा है ना कि हम लोग यहाँ आने वाले थे, 7 बजे का टाइम था, मैं स्टेज पे आना था, 5:45 उनका मैसेज आया, मुझे थोड़ा बुखार है आज, तो मैंने लेट देखा, मैंने गाड़ी में आते हुए देखा, और उन्होंने लिखा था शाहिद आज तुम संभाल लेना, मैं फिल्म की मिक्सिंग में लगा हुआ हूँ, एंड आई हैव टू बी हियर विद द फिल्म. सो दैट इज़ द पैशन ऑफ द मैन. उनके लिए हिज फिल्म इज़ अबव एवरीथिंग एल्स. His passion for his cinema has shown in the last
25 years or 30 years of the work that he has done. वो सिर्फ फिल्म डायरेक्ट नहीं करते, वो फिल्म की कहानी भी लिखते हैं, वो फिल्म के डायलॉग्स भी लिखते हैं, वो फिल्म की म्यूज़िक भी बनाते हैं. और ये बहुत रेयर चीज़ है. वो गाना भी गाते हैं. ही इज़ गॉट ही इज़ अ वंडरफुल सिंगर. बहुत रेयर चीज़ है कि इतनी सारी चीज़ें एक ही इंसान में हो. लेकिन इसके लिए आई थिंक वो ना फिल्म जब कंप्लीट हो रही होती है ना, तो वो मतलब ही इज़ गोइंग मैड बिकॉज ही इज़ डूइंग टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम. बट दैट्स द मैजिक ऑफ विशाल भारद्वाज. जब भी हमने साथ में काम किया है, ही हैज़ just given me something which is beyond me, and then he's sometimes kicked me and sometimes kissed me to achieve it. How beautiful. So see, he's a fantastic filmmaker. मुझे वो ना मेरे dad से मिले हैं. So you know, मैंने देखा था when dad and him worked together in some amazing movies. मैंने उनको साथ में देखा था, and when he actually called me for Kamine, मुझे believe ही नहीं हो रहा था that I will feature in a film with Vishal Bhardwaj. So it's been a very long journey for us together. Now, of course, this is our 4th collaboration together, and Old Romeo is a very different film that we've made together. It's Vishal sir finally said it at one of the radio station interviews. He finally said, "ये film मैंने क्लास के लिए भी बनाई है और मास के लिए भी बनाई है." So this is a film where we're trying to take cinema, to take a certain sensibility which is very personal to us, to as wide an audience as possible. It's an entertaining film, it's a very dramatic film, it's a very serious film, it's a very emotional film, it's a very funny film. It's a different world, it's a different experience, and we are super excited to share it with you guys. So please go and watch it on the 13th of Feb. That's lovely. काय झालं? Just say na loudly, say I love you, शायद I love you. Say it. देखो यार, मतलब हम तो बात we have मौका to talk to each other a lot, but I feel ऐसे मौके जहाँ पर मुंबई आपसे बात करती है, इन्हें मौका देना चाहिए. जोर से बोलो, I love you शाहिद कपूर. जोर से बोलो, I love you तृप्ति. I want to ask each of you, what does a Sajid Nadyar production mean? Well, this is my first film with Sajid sir, and he's just been so supportive from day one. I remember my first meeting with him, and I met him in the office, and he said, "Tripti, you know, for him to thank me for doing this film just means a lot. He's such a big producer, and he's been very very kind from day one. काफ़ी हंसी मजाक करते हैं वो. मतलब एक लगता है ना आपको प्रोड्यूसर इज इन द रूम, सो दिस इन्वायरमेंट इज गोइंग टू बी सीरियस, बट इट्स नथिंग लाइक दैट. उनके अंदर का एक बच्चा अभी भी जिंदा है, एंड ही इज जस्ट सपोर्टेड ऑल ऑफ अस, आई थिंक, थ्रू एंड थ्रू. Amazing. पैसे वाले जब मजाक करते समझ नहीं आता. एग्जिम बैंक है ना? When rich people make jokes, you don't know how to react. Please don't make jokes with us. You are our sponsors. Please be there. All right. I want to ask each of you. It'll be lovely to ask you what you discovered about Shahid as an actor or as a person. Tell us the one thing about Shahid Kapoor that we don't know yet. थोड़े से पोल खोल दो. हाँ. And Shahid, you'll have to do the same to us, huh? For Tripti. So you have to now be mindful. जितना डीप आप जाओगे उतने डीप वो भी जाएंगे. I think he's very funny. Yeah. Even on the set, he'll keep cracking jokes and, make sure that everybody is calm, everybody is comfortable. And this was not an easy film. There were days where we had like many difficult scenes and we had to be emotional. But then, like, he would catch your mood. He would catch if you're being sensitive or if you're, you need your time. You need to be, in your own zone. And then when you're out of it, then he'll catch you and he'll try and get you out of that zone. I think that's a very special quality that he has. ऐसा है. तो एक्चुअली हम दोनों ना थोड़े शाई टाइप के लोग हैं. तो मुझे यूजुअली ऐसा मेरे साथ होता है कि जो मेरा को एक्टर होता है ना, वो मुझे आके मुझसे बात करता है, फिर मैं थोड़ा सा खुल जाता हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली जब इस तरह की फिल्में होती हैं तो मैं फिल्म के मूड में रहता हूँ. सो कुछ दिन बीत गए, हमने कुछ सीन साथ में किए, और मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये तो मेरे से भी एक कदम आगे है. शी इज़ मोर शाय देन मी, शी इज़ मोर इंट्रोवर्टेड एंड इन हर ओन स्पेस. सो वन डे we were sitting next to each other, और कई दिन हम साथ में बैठे और हम अपने जोन में थे, ये अपने जोन में थी, मैं अपने जोन. फाइनली आई वाज लाइक, सो तृप्ति, व्हाट्स अप, दिस दैट, थोड़ा बहुत, एंड देन फाइनली वी ब्रोक द आइस. सो शी इज़ अ शाय गर्ल इनहेरेंटली. आई एम श्योर वो स्टेज पे भी जब आती होगी थोड़ा नर्वस फील करती होगी उससे पहले. हाँ.
But you know, this profession requires you to be out there to interact, लोगों से बातें करना. नहीं तो लोगों को लगता है आप rude हो या आपको attitude है. You know, तो ये सब misunderstandings होती है जब आप थोड़े shy होते हो. So I kind of noticed that about Tripti, and I felt like I wanted to reach out and make contact because you know, this is firstly I have liked her work, loved her work, and I was very happy that we're doing this film together. And this film, of course, requires us to work closely as a team because इस film में उसका जो रोल है और मेरा जो रोल है वो दोनों आके इस फिल्म को बनाते हैं. This is that kind of film, you know, it is kind of about the boy and the girl. That's the heart of the emotion of the film. तो धीरे धीरे I think our ice broke and अब now we've become very chilled out. ये भी अभी थोड़ा चिल हो गई है, ये थोड़ा मतलब ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं रहती, अभी खुल के आती है. And I'm actually most happy about that because I've had an amazing time working with her and I'm so happy that now, you know, we're jamming and chilling and having a good time together. That's amazing. So पहले टाइटैनिक था, अब पिघल गया, बहुत ही बढ़िया. अब तो पानी पानी है हर जगह, which is lovely. That's nice, Shahid, that you said it because yes, I think the ones. Okay, I don't think if I ever say the introverted ones put your hand up, they'll say what is wrong with you because we don't want to be recognized. But I think you spoke for everyone who may not be so out there, and I think you made everyone feel seen right now. So it's not that you need to shine the brightest in the room. You could be the quietest in the room, and you could still be who you are. So मैम एक मिनट हाथ नीचे ले यार सामने सामने ऑन योर सेंटर थैंक यू थैंक यू जाके इश्क